अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं। लिबर्टी, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज लिबर्टी। Liberty, the correct pronunciation of the word is liberty. In our lecture we will discuss introduction to liberty, meaning, definition, kinds of liberty, aspects of liberty, advantages of liberty, and safeguards of liberty. It is a lengthy topic, so we will try to cover it in two lectures. In our today's lecture, we are going to cover it up to the advantages, and the safeguards of liberty will be covered in our next video lecture. So start लेते हैं। Introduction. As we know that in political science, liberty of the individual and sovereignty of state are the two very important and pivotal concepts. These are actually the two poles of political science, far apart from each other. Most of the problems of political science revolve around these two concepts. One of the problems is to maintain a balance between these two. The state needs to be organized the way that its sovereignty is preserved without destroying liberty of the individual. इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स है। और पॉलिटिकल साइंस की मुताले का महवर ये है कि on the one hand we ensure liberty of the individual and on the other sovereignty of the state. So to keep these two in a balance, we need proper work and understanding of the concept of liberty. As far as sovereignty of the state is concerned, there are two theories. One theory says that state is an end in itself and individual is a mean to that end. It undermines the importance of individual and gives importance to state. It is actually the monastic theory of state or sovereignty. On the other hand, we have the theory that individuals' liberty and happiness are the ends of state and the state is a mean to it. This theory emphasizes on the liberty and happiness of the individual and considers state as a mean to achieve these. This is actually the pluralistic concept of state or sovereignty. अच्छा, तो ये स्टेट एज एन इंड इन इटसेल्फ, इसका मतलब ये है कि जब स्टेट बन गया है तो इसकी एग्जिस्टेंस और तरक्की ही इंसानों का मकसद है और रियासत का मकसद भी यही होगा। इस थ्योरी के सपोर्ट में देयर आर फिलोसफीज एंड अप्रोचेस लाइक आइडियलिज्म, fascism, Nazism, etc. In order to understand these problems, we must understand the nature and concept of liberty. अब स्टेट को कितनी हद तक सॉवरन रहना चाहिए और इंडिविजुअल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ये क्यों ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर and concept of liberty and human rights. अच्छा, तो this is the introduction to our topic and now we are moving towards the etymology and meaning of liberty.
In our previous classes, we had discussed about etymology, that it means the origin of words. So, liberty, the word liberty is actually derived from the Latin term labor, from the French liberties, and from the Middle English term liberty, and now in the modern English it is liberty. So basically its origin is Latin term labor, and labor means free, or the state of being free, or freedom. And it means liberty is the power to do one pleases, and it means freedom from restraints. Now we are moving towards the definition of liberty. So liberty is defined in two ways. One is in the negative sense our way, and the other is the positive sense our way. Liberty is the power to do anything provided it does not injure the freedom of others. Every individual is free to do what he or she wills, provided he she infringes not the equal freedom of others. So यहाँ पर जो डिफिनीशन हमने किया लिबर्टी का, इसका मतलब ये है कि लिबर्टी अफराद की वो सलाहियत और ताकत होती है जो उन्हें कुछ करने की इख्तियार देती है, बशर्ते कि वो दूसरे लोगों की आज़ादी और लिबर्टी को नुकसान न दे सके. So every individual is free to do what he or she wills, provided he she infringes not the equal freedom of others. तो लिबर्टी में it is also obliged on others that they have to respect the freedom and liberties of other. So in this sense, liberty implies certain obligations on state and society and compel them for certain do nots. It means कि रियासत को चंद ऐसे कामों से रोकना होगा जिससे लोगों के हकूक़ और आज़ादी महफूज हो सके, और अगर वो इन हकूक़ और आज़ादियों को तोड़ते हैं या उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो रियासत shall not do those actions. So in this sense, liberty implies duties, and it is the absence of all restraints. मतलब रियासत और दूसरे लोगों को चंद बातों का लिहाज करना होगा, चंद एक्शन से उनको रोकना होगा ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी को अमली बनाया जा सके. दूसरा डिफिनीशन हम लिबर्टी का इस तरह करते हैं कि लिबर्टी इज़ द प्रोविजन or presence of all opportunities and conditions which help individuals to achieve their best selves or versions. Liberty असल में रियासत, माशरे और दूसरे अफराद को इस काम की पाबंद बनाती है कि वो चंद अपॉर्चुनिटीज़ और कंडीशंस मुयस्सर बना सके ताकि लोग उनमें अपनी बेस्ट सेल्फ्स और वर्जन्स को हासिल कर सके. मतलब liberty is the product of human rights and conditions shall be provided that these rights must be exercised. So in this sense, the liberty causes certain obligations on the state and society and compel them for certain dues. It means, इसका मतलब ये है कि इस तरह के हालात रियासत ने इंश्योर करने हैं कि वहाँ पर लोग पर्सनल तरक्की कर सके और जो वो चाहते हैं उनको अमली शक्ल दे सके. तो this was the definition of liberty. To sum up, we can say that liberty is freedom
Freedom for what? Freedom for doing things which one pleases, but to a limit where they should not infringes or harms the rights of other people. And secondly, the state shall ensure those opportunities and conditions for people to realize their best self. अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास लिबर्टी का डिफिनीशन। और आम अल्फाज में इसे हम आज़ादी कहते हैं। आज़ादी not only from the constraints and restraints of society and state, but certain provisions to realize them their true selves and to respect liberties of each other. अच्छा, अब हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लिबर्टी की जानिब। तो there are different kinds of liberties. There are various kinds. First among these is natural liberty. The idea of natural liberty is of extreme significance, but it is also very vague and it mislead us in various terms. Natural liberty का मतलब क्या है? Natural liberty means the liberty man enjoyed in the state of nature. J. Rousseau and other social contractualists, uh, political philosophers who had educated the theory of social contract, उनके मुताबिक नेचुरल लिबर्टी का मतलब है वो लिबर्टी जो अफराद स्टेट ऑफ नेचर में इंजॉय करते थे। नाउ द क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ नेचर का क्या मतलब है? तो स्टेट ऑफ नेचर मीन्स द the era before the formation of state, where the people lived according to certain natural laws and where they enjoyed certain natural rights. तो इन कंट्रेक्चुअलिस्ट के मुताबिक वहाँ जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लिबर्टी लोगों को हासिल थी उसे नेचुरल लिबर्टी कहा जाता है। और ये आइडिया इसलिए अहम है कि बाद में जो सिविल लिबर्टी है वो इस बुनियाद पर डेवलप हुई। तो नेचुरल लिबर्टी was absolute and unlimited liberty. It was synonymous to license or freedom to harm others. मतलब यहाँ पर कोई control mechanism नहीं था। It was like natural power in the name of natural liberty, and it is now established that liberty is possible only in the state, law, and society, while in the state of nature, the law was natural law, which was actually might is right. So ये क्रिटिसिज्म नेचुरल लिबर्टी पर होता है। अच्छा, दूसरा जो काइंड है लिबर्टी का वो है सिविल लिबर्टी। Civil liberty means liberty in society guaranteed by the state. It is the sum total of rights recognized by law and protected by coercive authority of the state. Civil liberty का मतलब वो लिबर्टी या वो कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज़ है आज़ादी के जो रियासत का कानून लोगों के लिए फराहम करती है और ये कोर्सिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के ज़रिए नाफिजुल अमल होती है। So for individual liberty there are private or special laws, and for the protection of public liberty there are public or constitutional laws, and civil liberty in other words is the exercise of all civil rights. And the civil rights include right to life, right to move from one place to another, and various other rights. अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे साथ है इंडिविजुअल और पर्सनल लिबर्टी। It is liberty essential for the development of individual personality. इंडिविजुअल पर्सनालिटी की तरक्की के लिए
और इसकी परवरिश और नशोनुमा के लिए इंडिविजुअल या पर्सनल लिबर्टी इंतहाई अहमियत की हामिल है। एंड इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल लिबर्टीज़। इन फैक्ट पर्सनल लिबर्टी तमाम लिबर्टीज़ की बुनियाद है। जब भी हम लिबर्टी की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारी पर्सनल लिबर्टी होती है। And it consists of all rights available to individual like that apply property, expression, movement, association, etc. अच्छा, चौथे नंबर पर फोर्थली हमारे साथ है constitutional liberty. So it is the liberty right against the government and it is guaranteed by the constitution. Government is held accountable for its violation, and these are actually the rights against arbitrary interference by government. So constitutional liberty be is a very important kind or part and parcel of liberty. और ये तब यकीनी बनाई जा सकती है when there is the fundamental rights, rule of law, written constitution and separation of executive from judiciary, तो फिर constitutional liberty हमारे साथ इंश्योर होगी। अच्छा, इसके अलावा 5 नंबर पर हमारे साथ है इकोनॉमिक लिबर्टी। Economic liberty means a decent and sufficient economic income. It also means absence of fear of loss of income or unemployment. Economic liberty का मतलब है कि लोगों को ऐसे मौक़े हासिल हो कि वो एक बाइज़्ज़त तरीक़े से आमदन कर सके, प्रॉपर्टी बना सके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर सके, इकोनॉमिक सफिशिएंसी हासिल कर सके और वो फियर ऑफ लॉस ऑफ इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट से बच सके। It also means absence of economic constraint and inequalities and reasonable opportunities of earning to all people of earning their daily bread. Sufficiency for all before superfluity. Sufficiency for all before superfluity for other few. It means that the state shall ensure a mechanism that a sufficient amount of income and basic necessities are provided to all before these are accumulated by few rich. So economic equality को ensure करना is highly necessary for ensuring economic liberty. And it also means economic democracy and economic rights like right to work for reasonable hours, right to reasonable wages, right to leave in case of emergency and illness, pensions, etc. All these are the provisions for the insurance of economic liberty. तो इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है कि लोगों को रोज़गार, आमदन, जायदाद और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरियात हासिल करने की मौक़े हासिल हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदर जो लिबर्टीज़ हमारे साथ है इससे पहले जो हमने डिस्कस की उनकी रियलाइजेशन के लिए इट इज़ very important to be economically free and independent. So it is the precondition of all other liberties. None of them can really exist without it. Economic liberty के बगैर ये जो political, civil, even जो national liberty है ये exist नहीं कर सकती. A poor man has no freedom and a poor nation has no independence. जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, अगर फर्द गरीब हो
तो फ्री नहीं हो सकता, और अगर एक कौम गरीब हो तो वो भी आज़ाद नहीं रह सकता. The individual and nation both will be under the influence and control of others if they have no economic strength or freedom. Acha, unless there is economic liberty, uh, civil, political, and national liberties become illusory. जब तक इकोनॉमिक लिबर्टी न हो तो सिविक, पॉलिटिकल और नेशनल लिबर्टीज महज एक परेब रहेगी. अच्छा, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हमारे पास आती है मोरल लिबर्टी. मोरल लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू one's conscience for the growth of his or her character and personality. Moral liberty means that all people must be allowed to have and act according to their conscience because it is necessary for their character and personal growth. It is the right to freedom of belief and opinion, and there must be equal rights and opportunities to people following their religions or school of thoughts, and there should be non-discrimination by the state in religious affairs. तो moral liberty का मतलब ये हुआ कि लोग बिलीफ, ओपिनियन और कंशंस के मुताबिक आज़ाद होंगे और वो अपनी कैरेक्टर और पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए आज़ादी से ये परसू कर सकेंगे, और स्टेट इन चीज़ों में दखल मुदाखलत या इम्तियाजी सलूक नहीं बरताएगी. अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है पॉलिटिकल लिबर्टी. Political liberty is the power of people to determine as how they are to be governed. Political liberty is the power to be active in affairs of the state, and it is the exercise of political rights. It is the power of people to choose their own government, and it is synonymous to popular government or democracy. So political liberty is actually the conditions for the exercise of political rights. Political rights include right to vote, right to contest election, right to form association or political parties, freedom of opinion and expression. All these things within the ambit of political rights, and when there are opportunities for their exercise, it is the condition of political liberty, and it is very important because all liberties have relationship with it. When the people or individual have say in the affairs of their state and governments, the state and governments in turns have policies which benefit the individuals and people. मिसाल के तौर पर अगर लोग सियासी अमल में हिस्सा लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाती है तो गवर्नमेंट उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस और डिमांड्स का ख्याल रखेंगे. तो पहले सिविल लिबर्टी जब ये रिकॉग्नाइज हो जाती है तो द पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड देन दे गेट द पॉलिटिकल लिबर्टी. तो ये भी इंतहाई अहम है, पॉलिटिकल लिबर्टी. अच्छा, 8वें नंबर पर हमारे साथ है नेशनल लिबर्टी. नेशनल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ नेशन. It is just like the external sovereignty of a state, and it greatly depends nowadays on the economic progress of a state, and it is self determination of a nation. अगर
रियासत इकोनॉमिकली तरक्की कर चुका हो तो 21st सेंचुरी में वो अपने नेशनल लिबर्टी को महफूज रख सकता है। और अगर वो इकोनॉमिकली कमज़ोर हो, दूसरों को मोहताज हो, तो फिर इट becomes very difficult for it to keep its national independence and sovereignty. So these were the different kinds of liberties that we discussed. Now we discussed that what are actually the aspects of liberty. ये जितनी भी हमने kinds बता दिए और जो लिबर्टी का डिफिनीशन हमने किया था, अब हम इसकी निचोड़ को डिस्कस करते हैं कि ये हमें किन पहलुओं में अमली तौर पर नज़र आएगी। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। जितनी भी हमने काइंड्स बताए, इनकी देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। वन इज़ द लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब लोगों को जब सोचने की आज़ादी हो, ये इंतहाई ज़रूरी है। जितनी भी लिबर्टीज़ है उनको अमली शक्ल देने में और उनको प्रैक्टिकली रियलाइज़ करने में लिबर्टी ऑफ थिंकिंग और लिबर्टी ऑफ थॉट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। जब तक ये सोचने की आज़ादी न हो तो दूसरे आज़ादियों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो थिंकिंग पर जब क़दग़ने हो तो फिर दूसरी चीज़ों पर भी डेफिनेटली एंड ऑटोमेटिकली रिस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, the second aspect is liberty or freedom of expression. Expression in the form of speaking, in writing, in gesturing, जितनी भी expression की मीडियम्स है, इन सब की आज़ादी हो। और तीसरी जो aspect है वो है liberty of action। फर्ज करें अगर हम सिविल लिबर्टी एक्सरसाइज करते हैं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते हैं, इकोनॉमिक एक्सरसाइज करते हैं, मॉरल लिबर्टी एक्सरसाइज करते हैं, तो these are in the form of actions. But for exercising liberty of action, first we have to ensure liberty of thinking and expression. So these are the 3 aspects of liberty, and in the end we discuss advantages or ends of liberty. लिबर्टी क्यों इतनी ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस में और जनरली जब रियासत का मौजूदा ढांचा और शक्ल तश्कील जब से ये तश्कील दिया गया है तो लिबर्टी की बात हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसिस दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? वाई लिबर्टी? लिबर्टी इंतहाई ज़रूरी है और इसकी 3 बुनियादी मकासद है जो इंसान की इनफरादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी से वाबस्ता है। The first one is liberty is highly essential for the development of human personality. Without liberty and exercise of fundamental rights and the conditions necessary for all kinds of liberty, human personality cannot reach to its peak, to its zenith. इंसानी शख्सियत तरक्की के मदारिज नहीं तय कर सकती जब तक वो आज़ाद ना हो। तो for the development of human personality, the human personality includes many things: his individual, his social, his physical, his mental, his economical, his political, all his characters and behaviors include human personality। और ये तब तरक्की कर सकती है जब इसे क्या हासिल हो? आज़ादी हासिल हो। Secondly, liberty is essential for good governance or good government. रियासत में एक अच्छी तर्ज हुक्मरानी तब तक इंश्योर नहीं बनाई जा सकती जब तक इसकी मकसद लोगों की लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना ना हो। सो protection of liberties is actually synonymous to the concept of good governance and government.
और गुड गवर्नमेंट की बुनियाद ही यही इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की प्रोटेक्शन है. तो एक्चुअली it is a software installed behind the hardware of a good government. And thirdly, liberty is highly essential for the overall human progress. इंसान जब आज़ाद हो और गुड गवर्नेंस इंश्योर हो तो फिर यही इंसान इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों से मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ एरियाज़ में ऐसी कारनामे सर अंजाम देते हैं जो ओवरऑल ह्यूमन प्रोग्रेस का ज़रिया बन जाते हैं. Like in arts, in science, in culture, in politics, in all fields of life, human progress तब ही पॉसिबल है जब लोगों को शख्सी, इनफरादी और इज्तिमाई आज़ादियाँ हासिल हो. तो ये आज का हमारा टॉपिक था और हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी को. थैंक यू वेरी मच.